Namaskar, Vanakkam, and good morning. May I request all our distinguished guests on the dais and ladies and gentlemen to please stand for the national song. Vande Mataram, Vande Mataram, Shajalam Supalam Malaja Shitaram, Shajalam Supalam Malaja Shitaram, Jasya Shamalam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Shubhra Josna Pulakita Yamine Pura Kusumita Drumadala Shobhine Shubhra Josna Pulakita Yamine Pura Kusumita Drumadala Shobhine Suhashine Sumadhura Bhashine Sukhalam Varadam Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. Thank you. We shall now begin the inaugural ceremony of Shri Aurobindo Society's celebrations of the 150th birth anniversary of Shri Aurobindo and 75th year of India's independence by invoking the divine light of knowledge and harmony. May I now request our esteemed chief guest, Honorable Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah ji, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Tamilisai Sundara Rajan ji, Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangaswamy ji, and Shri Aurobindo Society Chairman, Shri Pradeep Narangji, as well as Honorable Speaker, Puducherry Legislative Assembly, Shri R. Selvam to please light the lamp to officially inaugurate the event. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Today, April 24th, is indeed a special date, as it was on this date in 1920 when the mother arrived in Pondicherry, her second and final arrival to be with Shri Aurobindo and to collaborate in the supramental yoga to bring down a new truth consciousness on the earth, which is paving the way for a new world, a new age. The mother once said that while her body was born in Paris, her soul had declared that it was Indian. In 1937, about the significance of this date, April 24th, she said that the anniversary of my return to Pondicherry was the tangible sign of victory over adverse forces.
Since August 15, 2021, Shri Aurobindo Society, through its various branches and centers across the country, has been organizing various programs to celebrate the year-long birth anniversary of Shri Aurobindo, 150th anniversary of Shri Aurobindo. But until today, we haven't had the occasion, because of the pandemic primarily, to have an official grand occasion to inaugurate the event. And we are grateful that today is that date we are doing that. And I now request our Vijay Bhai, Shri Vijay Poddarji, to officially give the welcome address. And before he comes over, I would like to briefly introduce him. We all call him Vijay Bhai, Shri Vijay Poddar. Vijay Bhai grew up at Shri Aurobindo Ashram since the age of 7 under the care and grace of the mother, completing all his education at Shri Aurobindo International Center of Education. As a pillar of Shri Aurobindo Society, he has initiated many projects to take forward society's vision and aim. He is member executive for administration and finance, as well as the director of Shri Aurobindo Institute for Research in Social Science. His office door is always open for anyone and everyone, even though he's busy holding important responsibilities and meetings for various organizations and affiliates operating under the umbrella of Shri Aurobindo Society. So Vijay Bhai, may I please request to come and officially give the welcome address for the event? Good morning and Jai Hind. Honorable Home Minister of India, Shri Amit Shah ji, honorable dignitaries seated on the dais, representatives of Pondicherry who are here with us today. On behalf of Shri Aurobindo Society, I am very happy to extend a warm welcome to you on this very special occasion. Amit bhai, आपके स्पेशल खास स्वागत 2 कारणों के लिए है। एक चीज़ मैंने सुनी है कि श्री अरविंद खुद आपके मनसा घर में पधारे थे और आपके परदादा जी से मिले थे। दूसरी चीज़ मैंने सुनी है कि उस समय उन्होंने उनको कुछ गाइडलाइंस दी थी गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मैंने सुना तो है, क्या ये सच है? और क्या कुछ भी है आपके पास, क्या शर्मिंद ने उस समय पर दादाजी को कहा था? कुछ भी अगर हो तो आप हमारे साथ शेयर करिएगा, ये बड़ा हमारा सौभाग्य होगा। दूसरा कारण ये है कि जिस कुर्सी पे और जिस पोजीशन पे आप बैठे हैं, उस पे स्वाधीन भारत के महानेता, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उसको सुशोभित किया था। और आज अगर भारत यूनाइटेड और स्ट्रॉन्ग है, इसका बहुत महान श्रेय सरदार वल्लभ भाई को जाता है। और अगर उस समय हमने उनकी बात सुनी होती, आज कश्मीर का प्रॉब्लम नहीं होता, चाइना का प्रॉब्लम नहीं हुआ होता, अगर हमने उनकी बात सुनी होती। I would like to share with you something which I found of interest. In the same month, December 1950, both Shri Aurobindo and Vallabhbhai Patel passed away. And exactly 1 month before that, in November 1950, Shri Aurobindo had given a statement pointing out the future intentions of China and the danger India faced. And what is interesting is, roughly the same time, within a few days, Vallabhbhai had written a letter to Jawaharlal Nehru, again warning him against the intentions of China. And the two statements are amazingly similar and extremely prophetic of what happened later between India and China. In fact, there is an interesting postscript
13 years later, after the Indochina War in 1962, the then President of the USA, John F. Kennedy, was shown what statement Shri Aurobindo had given, and he could not believe that Shri Aurobindo could have given that statement in 1950, warning what China would do. जब भारत स्वतंत्र हुआ, बहुत चैलेंजेस थी, मेजर डिफ़िकल्टीज थी. आज के दिन भी हमारा भारत बहुत ह्यूज चैलेंजेस फेस कर रहा है, अंदर से भी और बाहर से भी. और इसलिए हम सब की, all our prayers are with Modi ji and you, that the Divine Mother gives you the light, gives you the strength to lead India in these difficult times and to make India a leader in the world in every field. Amit bhai, we are grateful to you for having accepted our invitation to inaugurate the celebrations for the 150th birth anniversary of Shri Aurobindo and the 75th anniversary of India's independence. And the question we ask ourselves, how best shall we celebrate this momentous occasion? No doubt, we have to have many programs, events, talks, many things, and they are all needed. But we feel this will not be sufficient. What we need is our concrete actions to build the new India of Shri Aurobindo's and Swami Vivekananda's dreams. That is what will be our real offering and celebration. And this is possible only on a strong foundation of true nationalism. What is the true meaning of nationalism? I would like to read to you just a few inspiring words from what Shri Aurobindo said to the people, but most to the youth of India more than 100 years ago. And I quote, I'm quoting the words of Shri Aurobindo, little changes. What is nationalism? It is not a mere political program. Nationalism is a religion that has come from God. Nationalism is a creed which you have to live. If you have realized that you are merely instruments of God for His work, then you are truly nationalists. Then there will be a blessing on our work, and this great nation will rise again and become once more what it was in the days of its spiritual greatness. You, the youth, are the instruments of God to save the light, the spirit of India. You need to develop 4 qualities for this great endeavor: faith, selflessness, courage, and original thinking. How can there be any fear when you are conscious of Him who is within you? You have to work for this great and ancient nation because India has to save the world. The time has now arrived for our motherland, where nothing is dearer than her service. Work that she may prosper, suffer that she may rejoice. All is contained in that one single advice. These are the words of Shri Aurobindo to the students of the Bengal National College more than 100 years ago. और इस प्रयास में मैं कहना चाहूँगा आपको कि सारी श्री अरबिंदो सोसाइटी
हम जो कुछ भी कर सकते हैं, जो कुछ भी हमारी क्षमता है, आपके साथ जुड़े हैं और मोदी जी के साथ जुड़े हैं कि जो आपने ये लिया है बड़ा अभियान नए भारत का, उसमें जो भी हम योगदान कर सकते हैं हम सब मिलकर खुशी से करेंगे। इसके अंदर हमने कुछ शुरुआत की है। यू विल बी ग्लैड टू नो कि हमने हमारे इनिशिएटिव का नाम भारत हमारी माता दिया है, इंडिया आवर मदर। वी आर कॉन्शियसली इन्वॉल्विंग द यूथ as more than theory and philosophy. They have to learn to take up the responsibilities. And we have already started working in several fields and directions. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स में काम कर रहे हैं और हमने 22 लाख टीचर 30 स्टेट्स ऑफ इंडिया के अंदर कांटेक्ट किया है और अमेजिंग रिस्पांस आया है। हम लोग 60 विलेजेस के अंदर इंटीग्रल विलेज प्रोग्राम कर रहे हैं, जहाँ पे 1,50,000 लड़कियों और महिलाओं को हमने डिजिटल फाइनेंशियल लिटरेसी में ट्रेनिंग दी है। हम लोग हेल्थ के अंदर पीपल हु आर ओल्ड, टर्मिनली इल, हेल्पलेस, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, लीडरशिप, और एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हमारे काम का है भारत, सच्चा भारत, भारत की आत्मा, जिसके अंदर हम लोग इंटीग्रल योगा, संस्कृत, गीता, उपनिषद, वेद, इंडियन म्यूज़िक, इंडियन डांस, इंडियन आर्ट, इन सब फील्ड्स में बहुत कुछ काम शुरुआत हुआ है। यहाँ समय नहीं है उसकी डिटेल्स देने का, पर एक बुकलेट आपके पास होगी जिसके अंदर एक ग्लिम्स इसकी दी हुई है। अ वेरी सेंट्रल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया आवर मदर, भारत हमारी माता, इज स्वर्णिम पुदुचेरी, गोल्डन पौंडीचेरी। Pondicherry is a union territory, and the Prime Minister Modi ji had once said that the union territories should try to become role models in inclusive development, reaching out to the most vulnerable and marginalized. Drawing inspiration from this, we are working to make Pondicherry a model state, a center of excellence and training in every field, bringing the best practices from all over the world. We will learn from everyone and everywhere, and at the same time, based on the deeper spiritual foundation of India, our ancient knowledge systems and wisdom. Here too, the youth are encouraged to take the lead. All aspects of life are being taken up: education, health, agriculture, rural development, tourism, arts, sciences, technology, sports, skilling and entrepreneurship, even a model police force and a model prison. It will be a smart city, but with a difference. It will be a hub for innovation and research, trying out new ideas, encouraging local talent to come up. We have done an innovative research in homeopathy in agriculture and got some amazing results. आपको बहुत खुशी होगी जान के हमको क्या results मिले homeopathy in agriculture में. As important, and this is very, very important as all the above, we would like to make Pondicherry a model of harmony and oneness, breaking all divisions of faiths, religions, castes, gender, an example for the rest of India and the world. And Pondicherry is indeed ideal for this effort and endeavor. In this effort,
we are trying to bring together the people of Pondicherry, the state and the central governments, the Pondicherry University, JIPMER, the NGOs, the corporates, in a collaborative effort to create a golden Pondicherry for the sake of India and a golden India for the sake of humanity. अमित भाई, हमको इसके अंदर आपका पूरा सहयोग, आपका पूरा सपोर्ट होगा, जो हमको मालूम है आने वाला है, ज़रूर आएगा, और उसके साथ विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ये जो सपना है, मैं ज़रूर बहुत फेथ कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि एक दिन ये सपना हमारा श्री अरविंद का सपना, विवेकानंद का सपना साकार होगा, पौंडीचेरी में, भारत में, सारी दुनिया में. And what better offering can we make on this happy occasion of the Azadi Ka Amrit Mahotsav and the 150th birth anniversary of Shri Aurobindo. I would like to end on a very personal note. जब मैं छोटा था, बहुत चेस खेली है और बहुत शौक से खेली है और बहुत की है. तो हम लोग पौंडीचेरी को मॉडल बनाने का कोशिश तो कर रहे हैं, पर मैं एक थॉट आया कि शायद आपके सहयोग से पौंडीचेरी चेस में भी भारत में ऊपर आगे आ जाए. यू डोंट नो परहैप्स Amit bhai's connection with chess. So I would say, may the blessings of Shri Aurobindo and Mother be on all. Thank you very much. Thank you, Vijay Bhai, for inspiring us and for giving these interesting anecdotes about the history of Shri Aurobindo Society's work as well as other aspects. I would now request our elders, Shri Pradeep Narangji as well as Shri Vijay Bhai, to present our distinguished guests, our dignitaries, with a token of remembrance for this special occasion. May I first request Shri Pradeep Narangji to felicitate Honorable Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah ji, by presenting a small token of our appreciation and a remembrance of this moment. Pradeep Bhai, please also present a small token to Dr. Tamilisai Soundararajan, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry. And to Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri N. Rangaswamiji. And Pradeep Bhai will also honor, please, our guest, Honorable R. Selvanji, Speaker of Puducherry Legislative Assembly. And Pradeep Bhai, please also felicitate Shri Manoj Das Gupta ji, Managing Trustee of Shri Aurobindo Ashram. May I now request Shri Vijay Bhai to present the token of remembrance to Honorable Home Minister of Puducherry, Shri A. Namashivayam ji. Also to Shri PML Kalyan Sundaram, Member, Puducherry Legislative Assembly. And to Shri Ashwini Kumar, Chief Secretary, Puducherry. And last but certainly not the least, to Honorable Vice Chancellor of Pondicherry University and a friend of Shri Aurobindo Society, Professor Gurmeet Singh ji.
Thank you, Pradeep Bhai. Thank you, Vijay Bhai. Ladies and gentlemen, Shri Aurobindo Society has adopted Pondicherry Prison as a model prison project with an aspiration that the work done there may be replicated for the whole of India. Many innovative tools, programs, and practices have been adopted there and are being used for various reformation projects to rehabilitate the inmates. A small hamper of gifts has been lovingly prepared by some of the prison inmates, and I request Mamta Prem from Shri Aurobindo Society, Mr. Ravideep Singh Chahar, IG Prisons, and Mr. Bhaskaran, Jail Superintendent, to please present the gift hamper to our chief guest, Shri Amit Shah. April is a doubly special month because of another date, April 4th. It was on April 4th in 1910 that Shri Aurobindo arrived in Pondicherry. An explorer and adventurer in consciousness, he had once remarked that he was first and foremost a poet and a politician, and only later a philosopher. We began our program with national song, Vande Mataram. It was Shri Aurobindo who awakened the Shakti of India's soul when he infused a spiritual force and power in the mantra of Vande Mataram, an invocation to Mother India given by Bankim Chandra Chatterjee in Anand Math. And once that was done, it was as if the whole country awakened with a fiery aspiration for freedom. And Vande Mataram, as we know, was also the name of the English language nationalist publication that was started by Bipin Chandra Pal in August 1906 with only 500 rupees in his pocket. Shri Aurobindo was not only the principal writer and editor of this publication, he was also the one who directed the entire policy of this publication from 1906 to 1908 before his sentence in Alipur prison. May I now request Shri Pradeep Narangji, Chairman Shri Aurobindo Society, to address the gathering. And before he comes on the dais, I would just like to briefly introduce Pradeep Bhai, as we endearingly call him. Drawn to the teachings of Shri Aurobindo and the Mother, Pradeep Bhai decided to dedicate himself to spreading the light of their vision in various ways, giving up an illustrious business career. In his 4 decades of dedicated service to the Mother and to Shri Aurobindo Society, he has guided the setting up and management of many schools running across the country under Shri Aurobindo Society, besides overseeing several aspects of the works of the society. As Pradeep Bhai always reminds us, the Mother is not only the founder, but the permanent executive president of Shri Aurobindo Society, and as chairman, he is merely holding the chair for her. Somewhat reminiscent of Bharat, who looked after the kingdom of Ayodhya as a humble servant to Shri Ram, to the Paduka of Shri Ram, the king of Ayodhya. So may I now request Pradeep Bhai to please address the gathering. Okay, either way is good. I think this is better because that's too high for me. I think you can hear me better now. This gathering today was supposed to be held in February. When the Prime Minister was to come here, after he announced the high-level committee, he was to come here, and on the
Youth Day announced the opening of the celebrations. That could not happen because of various problems regarding COVID, etc. So it got postponed. So this was in our hearts that some work had remained incomplete. So we took it upon ourselves to invite the respected Home Minister, because he is the chairman of the National Implementation Committee of the celebrations. So it was very appropriate that we invited him, and it is even more appropriate that he said yes. Knowing that how busy he is, we had to fix a date on which we had to call him. Now at that time, in February, the elections were on, and he was, whizzing around all over India. In fact, as if carrying the whole mountain with him, So we thought that, might as well invite him, so at least we will stand in the queue. There will be so many people inviting him, so we wrote in February to Amit bhai that आपको हम बुलाएंगे, हमने तिथि भी तय कर दी है, which is 24th of April, which is presumptuous on our part to fix a date even. So, but to us the date is very important, hence we would like you to come and inaugurate the celebrations which the Prime Minister was supposed to do. We, of course, got news very late that he is coming, and finally he said that I will come on the 24th. So now to us it was something quite amazing. I had left it open to him. 24th of April is what we want, but any other date that suits you. But he chose 24th of April. I don't think he knew why he is choosing 24th of April, only because we had invited him. So he said yes. 24th of April, sir, is a date which is very important to us. It is the date of the final victory of truth over falsehood, as the mother has said. And it is a day when people ask the mother, what is the importance of these certain dates that we talk about? We talk about 15th of August, we talk about Swami Vivekananda's 150th birthday, this centenary, that centenary. What is so important on these particular dates that people come from thousands of miles all over the place just to be here on that date? Her answer was very beautiful, sir. Her answer was that on these dates, there is a concentration of divine forces, a definite, palpable concentration of divine forces. Divine forces that come close to us to help the elevation of consciousness of mankind at a universal level. And on Swami Vivekananda's 150th birthday, I remember we had brought out a special booklet because Shri Aurobindo had a very, very strong spiritual connection with Swami Vivekananda. For 15 days, Swamiji had visited him in the Alipur jail and told him what he was supposed to do. How Swamiji told him, how it happened, it was all internal, that thing took place. So these are moments where there is a great concentration of divine forces. See, on the one hand, there are divine forces and there are anti-divine forces. Anti-divine forces are not there just sitting idle, they oppose the divine forces. So we have to be very conscious of the presence of divine forces because we know that we stand on the other side and not on the dark side. So these days, the mother said, when we are open and accept and are conscious of the fact there is a concentration of divine forces, it really is, and you connect yourselves to that. We have, sir, over 300 centers all over India. And on these days, each and every center is on the same wavelength, that this is a day which is God's day.
we truly feel, that this is our date with God. 24th of April is our date with God. And sir, you have honored us by coming here, but I would say that you are privileged to be here today and receive this vibration that is happening today over here. I have something to say about our Prime Minister. It should not be misunderstood by certain sections. I have taken the permission of the Home Minister to say so. Somebody told me, and this is a lady who lives in England, has deep connections with India, of course, and she tells me, do you know, we have the first Indian Prime Minister. What a statement. If you go deep into this thing, the first Indian Prime Minister, what does that mean? Just what does that mean? If you look at our entire gamut of, I'm not saying, trying to degrade anybody. I'm talking of the Indianness aspect of it. Maybe great efficiency, great patriotism. I'm not talking of that. I'm talking of the Indianness of the Prime Minister. He is the first Indian Prime Minister. That I truly believe this. And I make this statement because a large number of people believe that. I hope this has your concurrence, sir. I have digressed a bit from the main theme of nationalism. Vijay Bhai has covered most of it, and I will mention just one thing about the society. Mother created the society for a specific purpose. And there is a specific mandate given to the society in our Memorandum of Association. Just one mandate, and that is to spread the message of Shri Aurobindo far and wide, through every possible manner, in any multifarious activity that we can have. Except, only difference is that our attitude should be totally pure and dedicated and surrendered to the Mother. Every activity succeeds, because this is an offering to the Divine. Society was created as an offering to the Divine, and that was the mandate given to all of us who are working for the Divine in all our 300 centers. And I'm happy to say that each center has a personality of its own. Some grow through jnana, some grow through karma, some go through bhakti. In one way or the other, as Shri Aurobindo says, there is a machine with 3 levers. You pull one which suits you. And jnana will lead you to bhakti, and bhakti will lead you to karma, and karma will lead you to bhakti. At one point, all will come together, as the Gita also says. And that is the point of total enlightenment and peace that we talk of, sir. So, and here in Shri Aurobindo Society, we have pulled, sir, all 3 levers. One goes faster, one goes slower, depending upon the attitude, the personality of the person, the nature of the person, the background of the person. But all 3 levers have been pulled. And I therefore believe that we in the society are responsible to Mother herself directly, that we do exactly what she wants us to do. The ashram was created much earlier than the society. A specific job was given to the society, to the ashram, which is our parent body. I look at the ashram as our parent body. Our managing trustee is here, and I can't tell you how happy I am that he is on the dais. He is the head of our parent body. And therefore I believe he is also the head of the Shri Aurobindo Society. It's we may have separate legal entities. We may not duplicate our activities for a specific reason, that we are not supposed to do that. Mother created society for a specific experiment that she's carrying out in the ashram. Shri Aurobindo Society was created
not as a trust, but as a society. Now see the difference. What amazing material acumen the mother had. She had the experience of a trust, but she created a society. Why was the society created and not another trust? Because a society is totally open body, responsible to the whole world. Anybody can get up and ask a question about our balance sheet. Anybody can ask a question. We are totally responsible to the laws of the country and follow it. When somebody asked the mother, "Mother, we have come to your feet. अभी क्या ये हम लोग ये कानून है वो कानून है इसको करें उसको करें हम आपके शरण में आ गए आप संभालिए सब ये हमें why should we bother about it?" The mother said, "No, you have no right. You have not reached a stage where you can bring down your own law. You haven't reached that spiritual stage. Until then, you have to follow the laws as made by man. Otherwise, they will be the rule of the jungle." Those are his exact words. So my friends, I have to be very, very clear about this. We are a spiritual body working in a material world. And there we have to succeed. Sometimes the world opposes us through various laws, rules, regulations, traditions which don't suit us. But we have to work and we continue to work and bang our heads against it. Appeal to leaders like Amit bhai and say, "ये लॉ ठीक कराइए ना क्या मुसीबत है ये नहीं होता हमसे वो नहीं होता इसमें कुछ चेंजेस लाइए उसमें हम चिट्ठियाँ लिखते हैं कभी कभी जवाब नहीं आता है क्योंकि बहुत चिट्ठियाँ जाती हैं." But there is a problem that we face. And we know this problem, we accept this problem, and we cooperate with the government in this, that we will try our best to do. So, but please also look at a situation where a spiritual institution with purity and sincerity is trying to work in a material world with difficult laws. Before I answer, I have one thing that I have wanted to mention. There is a project, sir, based on the Indian Constitution. Theme is nationalism, and our Constitution is not separate from nationalism. A friend of mine, a colleague, he's a lawyer in the Jaipur High Court, and he's a very big pillar of strength in our Jaipur, Rajasthan State Committee. So the Indian Constitution has 24 parts. He had an idea that as to what Shri Aurobindo has written 30,000 pages, what has he said about the Indian Constitution? He was working on it passionately. And he came to a certain, and he sowed a seed which really appealed to all of us. That we did research on it, sir. And the research is that the President, Dr. Rajendra Prasad, asked Nandlal Bose, the artist of Shanti Niketan, that I want you on the first page of each chapter to put a painting which would depict the concerned yuga. What is the time? Starting from Mohenjo-daro and going right to the end. And we have taken, after research, quotations from Shri Aurobindo, which are relevant to the time that, as pointed out by Nandlal Bose. And this includes Mahabharata, this includes Ramayana, starting all the Chatur Yugas, and it's beautifully compiled book that finally came out with a lot of aspiration and love with us. That book is lying before you today. It is the research first of its kind ever done. मैं चाहूँगा कि आप इसको अभी खोलें प्लीज़ और इसको रिलीज़ करें और दिखाएं लोगों को कि हमने कितना प्रयास करके इस स्टेज तक पहुँचे.
अमित भाई, थैंक यू वेरी मच. आपने इसको स्वीकार किया. ये एक कई महीनों, कई वर्षों की रिसर्च के बाद ये बनाई है, क्योंकि श्री अरविंद ने इतना कुछ लिखा है, उसमें से चुनना आसान नहीं था. वेरी डिफिकल्ट. एंड Sri Aurobindo's writings are an ocean of beauty, of wideness, of depth. To choose from that and to connect it to what the Sri Aurobindo Constitution was not an easy job. उसने उसके दिमाग में तो कीड़ा आ गया, बाकी हम लोग करना पड़ा सारा. So Sri Aurobindo Society, our functioning is like this. Starts with an individual and grows into a collectivity. And that is how this research is taking place. And thank you so much for listening.
Thank you, Pradeep Bhai. Ladies and gentlemen, it is indeed our honor and privilege to have with us today our distinguished chief guest, the Honorable Union Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah. We are inspired by his long and dedicated service to Mother India and his exemplary leadership and organizational abilities. May I now request Shri Amit Shah to address the gathering. मंच पर उपस्थित महामहिम डॉक्टर तमिलसाई जी, पांडिचेरी के मुख्यमंत्री श्री एन रंगास्वामी जी, अध्यक्ष पांडिचेरी विधानसभा श्री आर सेल्वम जी, पांडिचेरी के गृह मंत्री नमो शिवाय जी, अध्यक्ष श्री अरविंदो सोसाइटी प्रदीप नारंग जी, मनोज दास गुप्ता जी, पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलपति गुरमीत सिंह जी, श्री अरविंद सोसाइटी के श्रीमान विजय पोद्दार जी, और आज देश भर से श्री अरविंद, उनके विचार और उनके संदेश को संरक्षण और संवर्धन करने वाले, उसका प्रचार और प्रसार करने वाले देश भर की संस्थाओं से आए श्री अरविंद के अनुयायियों को मेरा विनम्र प्रणाम। मैं 13 साल की आयु से सार्वजनिक जीवन में हूं। 17 साल की आयु में मैं राजनीति में आया। बचपन से ही युवक महोत्सव से लेकर कई जगह वक्तृत्व स्पर्धाओं के अंदर मैंने कई मेडल जीते हैं, मगर आज की सभा को संबोधित करना मेरे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि जो श्री अरविंद के संदेश के लिए अपना जीवन जीते, श्री अरविंद के संदेश को घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, भारत के युवाओं को श्री अरविंद के संदेश से प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, इनके सामने भला मैं कैसे श्री अरविंद पर बात कर सकता हूं। इसलिए मेरा मैं संकोच के साथ आपके सामने, आप सबके सामने बात करना चाहता हूं। मित्रों, पर आज मुझे जरूर बोलना है और मेरे की मन की भी इच्छा है कि आज मुझे बोलना चाहिए। श्री अरविंद के जीवन कवन, उनके संदेश, उनका जो कुछ लिखा हुआ है, जो कुछ बुला हुआ है, वो सारी चीजों को अगर एक वाक्य में समेटना है तो कोई कैसे समेट सकता है। मैंने अभी मंच पर ही बैठकर सोते सोते एक वाक्य बनाया है कि अगर भारत को समझना भौगोलिक रूप से नहीं, कानूनी दृष्टि से नहीं, भारत की आत्मा को समझना है तो श्री अरविंद को पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ढेर सारी चीजों के पचड़े में पड़े बगैर वेद, उपनिषद, गीता, बहुत सारे महाकाव्य, बहुत सारे साहित्य के ग्रंथ, ये सब चीजों को पढ़े बगैर श्री अरविंद को ध्यान से पढ़ लोगे तो भारत की आत्मा का परिचय सबसे अच्छा हो जाएगा और भारत को आप आत्मसात कर सकते हो। इसी प्रकार का जीवन श्री अरविंद ने जिया और श्री अरविंद ने उनके साहित्यों को ध्यान से पढ़ते हैं, उनके संदेश को समझते हैं, तो उन्होंने एक अलग प्रकार की भारत की व्याख्या करी है। ये दुनिया में सभी देश जियोपॉलिटिकल देश है, कोई रिजोल्यूशन से बने या तो संधियों से बने। दो राज्यों के बीच में युद्ध होता है और फिर एक नए देश का सर्जन होता है, चाहे यूरोप हो, अमेरिका हो, सोवियत संघ हो, चीन हो, सारे देश जियोपॉलिटिकल देश है। दुनिया में एकमात्र देश ऐसा है जो जियो कल्चर है, जो संस्कृति के आधार पर बना है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है। ऐसा देश हमारा भारत देश है।
और ये बात श्री अरविंद के हर वक्तव्य में से आप चाहे किसी भी विषय पर के हो, इसको लेकर चलते हो, इसको प्राप्त करते हो। और अगर भारत को जियो कल्चर कंट्री के नाते देखने की शुरुआत करेंगे तो आज की सभी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से लेकर बंगाल तक कहीं ना कहीं एक संस्कृति हम सबको बांधे हुए है। संविधान अपनी जगह बहुत महत्व रखता है। संविधान हम सबके लिए सम्मान पात्र है, सम्मान के लिए करने के लिए एक ग्रंथ है और इसी के आधार पर देश चलना चाहिए। पर बॉन्डिंग अगर कोई है तो ये संस्कृति है, भारत की आत्मा संस्कृति है। ये बात जब आप श्री अरविंद को पढ़ोगे तो तुरंत ही मालूम पड़ जाएगी। और पर श्री अरविंद ने जो भविष्यवाणी की है भारत माता के लिए, मैं अंत में बात करूंगा, वो इसी के आधार पर की है। श्री अरविंद भारतीय संस्कृति की चिर पुरातन चेतना की नदी का एक जो प्रवाह है, हजारों साल से विश्व के कल्याण के लिए भारतीय संस्कृति, भारतीय विचार की एक संस्कृति बह रही है, एक नदी बह रही है। ये नदी को श्री अरविंद ने एक ही जीवन में नई चेतना, नई गति, नई ऊर्जा और नई दिशा भी प्रदान करने का काम किया। समय समय पर अनेक लोगों ने किया, ऐसे श्री अरविंद ने भी किया। और ऐसे समय में किया जब चहु और अंधकार था, कोई आशा का किरण दिखाई नहीं पड़ता था, देश गुलामी में रहा था, अंग्रेजों का शासन था। उस वक्त कितने मजबूत आशावाद के साथ उन्होंने भविष्यवाणी भी की और भारतीयता का महिमा मंडन भी किया। मित्रों, जब तक श्री अरविंद को, इनके विचारों को हम नई पीढ़ी को नहीं सौंपते हैं, नई पीढ़ी को उसमें जानने की उत्सुकता नहीं पैदा करते थे, मुझे लगता है कि हमारा 150वीं वर्ष है जो श्री अरविंद का, उसको मनाने के सारे उद्देश्य वहीं के वहीं रह जाए। मेरा सभी से आग्रह है, आप कर ही रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। शायद मैं यहां ना आया तो मुझे मालूम भी नहीं होता कि इतना सारा काम चल रहा है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मगर थ्रस्ट देने का एरिया युवा है, थ्रस्ट देने का एरिया किशोर की पहले की, किशोर अवस्था की पहले की आयु है। मेरे जीवन का अनुभव है, अगर किशोर अवस्था में, किशोर को युवा बनने से पहले अगर एक रास्ते पे ले जाते हैं तो पूरा जीवन वही रास्ते पे वो कहीं कमोबेश चलता है। तो हमारा आग्रह, हमारा फोकस एरिया वही होना चाहिए। मैं गुजरात से आया हूं, श्री अरविंद का गुजरात से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। काफी समय तक गायकवाड़ सरकार के अंदर शिक्षा के ऊपर उन्होंने काम किया और ढेर सारे गुजरातियों ने श्री अरविंद से प्रभावित होकर श्री अरविंद के जीवन के संदेश को ही अपना जीवन बना लिया। आप बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि एम मुंशी श्री अरविंद के शिष्य रहे हैं और आगे के जीवन में श्री कन्हैयालाल मुंशी ने भारत के संविधान की रचना में बहुत बड़ा योगदान दिया और संविधान के अंदर भारतीय विचार प्रमुख हो, इसके जो 8-10 पुरोधा थे उसमें श्री के एम मुंशी थे। और उन्होंने, मुझे लगता है शायद श्री अरविंद के पास ही शिक्षा प्राप्त करते करते ये करा होगा। बाद में ढेर सारी भारतीय संस्कृति के भारतीय विद्या भवन की स्थापना की, भवंस की स्थापना की, भारत की सभी प्रकार की कला को चिरंजीव करने के लिए उन्होंने काम किया। श्री चंपकलाल पुरानी, वो भी 30 साल तक श्री अरविंद के साथ रहे। श्री ए बी पुरानी, जिन्होंने पहली बायोग्राफी लिखने का काम किया, वो भी गुजरात से थे। कवि सुंदरम के बारे में कौन नहीं जानता। गुजरातियों को श्री अरविंद को पढ़ने का सौभाग्य अगर मिला
तो सुंदरम के कारण ही मिला है। इन्होंने बहुत बड़ा काम किया गुजरात को श्री अरविंद के साथ जोड़ने का काम। चुनीभाई पटेल, श्री कृष्णलाल भट्ट और वसुदेव भट्ट और जयंतीलाल पारीख, ढेर सारे लोगों ने श्री अरविंद के साथ जुड़कर पूरा जीवन श्री अरविंद के संदेश को दुनिया में पहुंचाने के लिए काम किया। एक प्रकार से एक गुजराती व्यक्ति नाते मुझे भी बहुत गौरव होता है कि इतने सारे लोगों ने श्री अरविंद के लिए बहुत सारा काम किया। मित्रों, आज जब श्री अरविंद का 150वीं जयंती का वर्ष है, कोरोना के कारण इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, मगर कोई भी बड़ा काम होता है तो पहले दिक्कतें आती है, उसके बाद में ही सफलता आती है। मुझे विश्वास है कि 150वीं जयंती मनाने का भारत सरकार और श्री अरविंद सोसाइटी ने जो निर्णय किया है वो निश्चित रूप से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सफल होगा। और श्री अरविंद के जीवन को देखते हैं तो भारत के साथ उनका जुड़ाव भी एक प्रकार से संयोग से भी हो गया है, क्योंकि भारत का आजाद भारत का दिन और श्री अरविंद का जन्मदिन दोनों एक ही हैं। और श्री अरविंद जब 75 के हुए, देश आजाद हुआ, और श्री अरविंद जब 150 के हुए, तब देश की 75वीं सालगिरह होने जा रही है। मुझे लगता है ईश्वर ने, नियति ने संकेत श्री अरविंद के विचारों के माध्यम से, श्री अरविंद के विचारों के तत्वाधान के ऊपर बनाई गई नीतियों के आधार पर ही उनकी कल्पना का भारत हो सकता है, इसलिए ही किया होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाने का जो निर्णय किया है, ये निर्णय के पीछे 3 मुख्य बिंदु हैं। देश को यहां तक पहुंचाने के लिए, देश को आजाद करने के लिए 1857 से 1947 तक 90 साल तक अनेक लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी। कुछ के भाग्य में यश था, कुछ के भाग्य में यश नहीं था। लाखों लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, प्रैक्टिस छोड़ दी, दुकान बंद कर दी, घर बार कुर्क हो गया, अंग्रेजों ने उनके घर बार को कुर्क कर दिया, रोड पर आ गए। लाखों लोगों ने अपने जीवन का ही बलिदान दे दिया, उसके बाद में आजादी मिली है। मगर कई गुमनाम लोग ऐसे हैं जिनको आजादी के इतिहास में शायद जगह नहीं मिली। प्रधानमंत्री मोदी जी का आग्रह है कि हर गांव के साथ आजादी की लड़ाई को जुड़ी हुई चीज को एक पुनर्जीवित कर वो गांव के अंदर के बच्चों को आजादी की लड़ाई के संस्कार देने का काम करना। जाने माने सभी स्वतंत्र सेनानी और अनजान कई स्वतंत्र सेनानियों को फिर से एक बार हमारी नवी पीढ़ी के मानस पटल पर स्थिर करना और इसके माध्यम से देशभक्ति के संस्कार फिर से पुनर्जीवित करना, एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य है 75 साल के में हमारी जो सिद्धि हमने प्राप्त की है वो भी देश भर की 130 करोड़ की जनता तक पहुंचाना। और तीसरा उद्देश्य है 75 साल से 100वें साल तक 25 साल देश के अमृत काल मानकर हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक मूल्यों को बचाए रखते हुए विश्व में हर जगह पे, हर क्षेत्र में भारत सर्वोच्च हो, इसका संकल्प लेकर एक पूरी पीढ़ी 25 साल तक काम करे, वो हमारे 75 साल का। और ये 3 उद्देश्य के आधार पर ही आजादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि ईश्वर ने हमें जन्म ही आजादी के बाद दिया। ना हम सेना में भर्ती है, ना आजादी के पहले जन्मे। देश के लिए जान देने का मौका तो हमें मिल ही नहीं सकता, परंतु देश के लिए जीने से हमें कोई नहीं रोक सकता। और आज 75वें साल में, श्री अरविंद के 150वें साल में हर व्यक्ति ने संकल्प करना चाहिए कि हम देश के लिए जिएंगे। मित्रों, श्री अरविंद घोष का
150वीं जयंती का वर्ष है। प्रधानमंत्री जी ने एक उच्च स्तरीय समिति उनकी अध्यक्षता में बनाई है और 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से उन्होंने श्री अरविंद को उल्लेखित कर एक बात कही थी कि हम आजादी के 75वें साल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत बनाने के लिए सब लोग प्रयासरत हो, ये भावना उन्होंने देश के सामने लगी और उनकी कल्पना का अगर भारत बनाना है तो श्री अरविंद के विचारों को हमने आगे ले जाना पड़ेगा। इन्होंने हमारे सामने कई सारी बातें रखी हैं। श्री अरविंद पूरा जीवन शायद मृत्यु पर्यंत मेधावी छात्र रहे। उनके अंदर का विद्यार्थी उन्होंने देह छोड़ा तब तक जीवित था। भले ही फॉर्मल एजुकेशन इंग्लैंड में हुआ, परंतु भारतीयता में रचे बसे इस व्यक्ति ने पूरे देश को भारतीयता की अर्वाचीन व्याख्या से परिचित कराने का एक बहुत भगीरथ काम किया है। भारतीयता की व्याख्या हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से करता है, परंतु भारतीयता की व्याख्या को 20वीं शताब्दी की भाषा में अगर किसी ने करने का काम किया है तो श्री अरविंद और विवेकानंद दोनों ने ही किया है। और मुझे लगता है कि हम सब के लिए वो पथदर्शक है, वो हमारा आज भी गाइड कर रही हैं। उन्होंने इंग्लैंड से ही 2 महान क्रांतियों में से प्रेरणा लेने का काम किया। आयरलैंड की क्रांति सिन फेन आंदोलन और इटली का गेरिबाल्डी का आंदोलन, ये दोनों से ही उन्होंने प्रेरणा ली और फिर यहाँ आकर उनके मन में वो क्रांतिकारी, दोनों क्रांतियों से प्रेरणा लेकर वो क्रांतिकारी जिंदा हुआ। आईसीएस की परीक्षा देने की जगह उन्होंने भारत के लिए काम करना तय किया। सयाजीराव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराजा ने एक प्रैक्टिस बनाई थी कि हर साल वो इंग्लैंड जाते थे और तेजस्वी भारतीय बच्चों को उनके राज्य के लिए लेकर आते थे। 1893 में सयाजीराव उनको बड़ौदा शिक्षा के लिए लेकर आए। ये 1893 का साल देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 1893 के साल में 1893 में ही तिलक महाराज ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत कर हमारे त्योहारों को आजादी के आंदोलन के साथ जोड़ने की शुरुआत की थी। और मास लेवल पर, पहले आजादी का आंदोलन एक बौद्धिक आंदोलन था, जनता का कोई जुड़ाव नहीं था। कुछ विद्वान मिलते थे, दुनिया भर की डेमोक्रेसी की चर्चा करते थे और यहां पर हमारा राज होना चाहिए इसकी चर्चा करते थे। जनता कटी हुई थी। 1893 में तिलक महाराज ने जब गणेश उत्सव किया तब जाकर जनता का जुड़ाव हुआ। 1893 में ही विवेकानंद दिग्विजय करने के लिए पूर्व की ओर से पश्चिम में रवाना हुए और 1893 में ही गांधी जी अफ्रीका के लिए रवाना हुए। ये बहुत बड़ा संयोग है। कुदरत भी कुछ चीजें जब करती है तब बहुत सोच समझ कर करती है। और 1893 में श्री अरविंद गांधी जी पूर्व से डरबन गए और श्री अरविंद पश्चिम से पूर्व की ओर लौटे। और ये बहुत बड़ा संयोग है। जो आजादी के इतिहास को बारीकी से पढ़ते हैं उनको ये सारी घटनाओं को सिंक्रोनाइज करने में 1 मिनट नहीं लगेगा। ये बहुत बड़ा संयोग था 1893 का। श्री अरविंद ने वडोदरा के अंदर न केवल शिक्षा, गुड गवर्नेंस पर भी बहुत काम किया। शिक्षा के साथ साथ महाराजा सयाजीराव उनको आसपास के स्टेट्स के अंदर भेजते थे और उस वक्त उनके दीवान ने एक माइनर हिंट्स कर एक पुस्तक लिखा था जिसमें गुड गवर्नेंस की बहुत सारी टिप्स थी। वो टिप्स का इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उनको वहां भेजने का काम बड़ौदा के महाराजा ने किया था। और उसके साथ ही श्री अरविंद ने वहां पर
एक सबसे पहला एक श्रृंखला इंदु प्रकाश नाम की पत्रिका की शुरुआत करी और वहीं से जनता के साथ जुड़ाव की उनकी शुरुआत हुई। गुप्त रूप से बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में भी रहे। एक प्रकार से दोहरा जीवन वो वहां व्यतीत करते थे। मन और आत्मा क्रांति के साथ जुड़े हुए थे। नौकरी सयाजीराव गायकवाड़ की शिक्षा के लिए करते थे, मगर उन्होंने दोनों भूमिकाओं का निर्वहन बहुत अच्छे तरीके से किया। 1905 में एक और मोड़ आया। लॉर्ड कर्जन ने बंग भंग किया। बंग भंग करते ही देश भर के अंदर एक बहुत बड़ी चेतना आ गई, बहुत बड़ी चेतना आई। उन लोगों के समझ में आएगा कि अंग्रेजों के इरादे क्या है, और देश भर के युवा बंग भंग के विरोध में एकत्रित और विशेषकर बंगाल, पूरा अभी का पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, ये बहुत जागरूक आई। और श्री अरविंद ने बड़ौदा की नौकरी छोड़कर बंगाल गए और 1905 से 1910 तक वो भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन की उल्का बनकर एक दीप्यमान तारा बनकर रहे। उन्होंने जो भी किया वो प्रखर रूप से किया। इन्होंने जो भी किया असंदिग्ध किया, विदाउट कंफ्यूजन किया। उन्होंने जो भी किया परिणाम लक्ष्य किया, और इसी के कारण ही 2005 से 10 के छोटे से कालखंड में भी वो क्रांतिकारी आंदोलन के एक मुखर नेता बने। उनको जेल में भी जाना पड़ा। अलीपुर बम षड्यंत्र मामले में उनको गिरफ्तार किया गया और 1 साल के लिए जेल भेज गया। पहला उनको आध्यात्मिक अनुभव वहीं पर जेल में उनको हुआ, और वहीं से फिर 1910 से उनका जीवन में एक प्रकार का परिवर्तन आया। मित्रों, इन्होंने पॉलिटिकल एक्शन का एक सुसंगत और महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित करने की प्रयास किया था। उसको एक प्रकार से आध्यात्मिक राष्ट्रवाद भी आप कह सकते हैं। पहली बार राष्ट्र की अवधारणा उन्होंने रखी, और वंदे मातरम का गीत और श्री अरविंद की राष्ट्र की अवधारणा दोनों को देख लोगे तो इसके बीच में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और उनकी राष्ट्र की अवधारणा, जो मैंने पहले कहा, जियो कल्चर देश की अवधारणा के अनुरूप है। सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए राष्ट्र की अवधारणा नहीं थी। स्वराज एक शब्द है, मगर इसका इंटरप्रिटेशन आजादी के आंदोलन के वक्त भी और आजादी के आंदोलन के बाद भी राजनीतिक सत्ता के रूप में हो गया। स्वराज में सबसे महत्वपूर्ण शब्द स्व है। स्वभाषा, स्व संस्कृति, स्वधर्म, सारी चीजों में स्व है, तभी जाकर स्वराज संपूर्ण होता है। स्वराज का मतलब सिर्फ पॉलिटिकल पावर से नहीं है। अंग्रेजों के पास था, आज हमारे लोगों के पास है। ये स्वराज नहीं है। ये देश भारत की मिट्टी की सुगंध में से निकले सिद्धांतों के आधार पर चले। ये देश भारत की संस्कृति के बनाए हुए अवधारणाओं के आधार पर चले। ये देश यहां की महान परंपराओं को आगे लेकर चले। वो स्वराज का मतलब है। और स्वराज के मतलब को पूरा देश उस वक्त कंफ्यूज था। किसी के पास समय नहीं था, अंग्रेजों को निकालने में सब पड़े थे। मगर श्री अरविंद ने स्वराज का कंसेप्ट ले डाउन करने में कोई कोताही नहीं की, कोई कंफ्यूजन नहीं था, बड़ा स्पष्ट था। और इसीलिए वो मानते थे कि भारत में वो शक्ति है जो पूरे विश्व को दीप्यमान कर सकती है, सारे विश्व का कंफ्यूजन दूर कर सकती है। और वो अवधारणा उन्होंने राष्ट्र की अवधारणा के लिए करी। श्री अरविंद ने बंगाल छोड़कर वाया चंद्रनगर पांडिचेरी में आए, और उसके बाद में उनको पूरी दुनिया जानती है। पांडिचेरी उस जमाने भी आजादी का आंदोलन का बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा। इसका एकमात्र कारण श्री अरविंद थे। यहां पर उन्होंने
द लाइफ डिवाइन, गीता पर महान निबंध लिखा, मानव चक्र, योग का संश्लेषण, उनकी महान कविता सावित्री स्मारकीय साहित्यिक और आध्यात्मिक उपलब्धियों के रूप में आज भी इतनी ही रिलेवेंट है। ढेर सारा साहित्य, ढेर सारे प्रवचन इन्होंने यहां पर किए और युगों युगों तक रास्ता बदले बगैर पूरा राष्ट्र कैसे चल सकता है, इतना पाथे उन्होंने हमें दिया। आध्यात्मिक अनुभव उनको शंकराचार्य मंदिर में भी हुआ और उसके बाद में मैं कह सकता हूं, एक नया शब्द है, श्री अरविंद के लिए काम करने वालों लोगों को शायद पसंद भी ना आए, मगर एक प्रकार से उन्होंने आध्यात्मिक राष्ट्रवाद को भी व्याख्यायित किया, क्योंकि हमारी संस्कृति में बॉर्डर की कल्पना ही नहीं है। हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे साहित्य के अंदर कहीं देश का नाम का शब्द ही नहीं। हम अंतरिक्ष के भले के लिए काम करने वाले लोग हैं, समग्र विश्व के भले के लिए काम करने वाले लोग हैं। राष्ट्रवाद को पश्चिम की व्याख्या से देखेंगे तो संकुचित लगेगा, मगर राष्ट्रवाद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देखेंगे तो समग्र विश्व का कल्याण करने का एक यज्ञ दिखेगा। बहुत सारे लोग आज पश्चिम के विद्वान राष्ट्रवाद को पश्चिम की व्याख्या से मूल्यांकन करते हैं। राष्ट्रवाद की व्याख्या इतनी छोटी नहीं है। राष्ट्रवाद जिस देश की संस्कृति समग्र विश्व का सोचती हो, अंतरिक्ष तक का सोचती हो, पशु पक्षी जल और वनस्पति तक का सोचती हो, इसका राष्ट्रवाद समग्र देश के लिए है। वो वसुधैव कुटुंबकम में से उपजा हुआ, जन्मा हुआ राष्ट्रवाद होता है और इसकी व्याख्या सबसे पहले श्री अरविंद ने करी। श्री अरविंद ने अद्भुत मेगा प्रतिभा, शिक्षा, ज्ञान और अपने अनुभव का पूरा निचोड़ देश के सामने रखा है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, श्री अरविंद के अनुयायियों को बहुत अच्छा लगेगा। अब मेरे भाषण के बाद देश की नई शिक्षा नीति को ध्यान से पढ़ना। आपको हर जगह पे श्री अरविंद के शिक्षा के विचार अपने आप दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि इस देश को जो जानते हैं वो सभी जानते हैं यही हमारा राजमार्ग है, यही हमारा आगे बढ़ने का रास्ता है। भारत कभी छोटा नहीं सोच सकता, ना कभी भारत ने छोटा सोचना चाहिए। एक समय आ गया हम गुलाम हो गए, परंतु हमारी सोच, हमारी चीर पुरातन संस्कृति कभी हमें छोटा सोचने की कभी परमिशन नहीं देती है। मित्रों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्री अरविंद के विचारों के आंदोलन के प्रचार प्रसार के साथ जुड़े हुए लोगों को कि आप इस देश के युवाओं को फोकस करिए, आज इस देश के किशोरों को फोकस करिए और आप इस देश की शिक्षा व्यवस्था को फोकस करिए। अगर ये तीन चीजें श्री अरविंद के विचारों के युक्त हो जाती है, ये तीनों क्षेत्र में श्री अरविंद के विचार नीचे तक, हर राज्य की भाषा में हम नीचे तक परकोलेट करने में सफल होते हैं, तो श्री अरविंद का कल्पना का भारत बनना मुश्किल नहीं है। कोई एक व्यक्ति नहीं बना सकता इसको, ढेर सारे लोग चाहिए और ढेर सारे लोगों को पहले उनकी कल्पना को समझना पड़ेगा, तभी जाकर वो स्वप्न के साथ जुड़ सकते हैं। उन्होंने शिक्षा को मात्र शास्त्र नहीं, उन्होंने कहा था कि शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान की जानकारी बहुत जरूरी है, शिक्षकों के लिए संस्कृति की जानकारी भी बहुत जरूरी है। और इन्होंने कभी भी योग को एक प्रकार से जीवन से जुड़ने का नाम ही योग है, ऐसी एक कोट अनकोट नहीं है, मगर मैं जो अर्थ समझा हूं मैं आप सबके सामने रखता हूं। जीवन से जुड़ने का नाम ही योग है, इस प्रकार की व्याख्या करने का प्रयास किया है। एक व्यक्ति अपने जीवन में कितना कर सकता है
इसका दुनिया भर में उदाहरण ढूंढकर 1-2 उदाहरण इकट्ठा करेंगे तो इसमें श्री अरविंद आएंगे। एक जीवन में 100 जीवन जितना काम करे बगैर, यश की कोई अपेक्षा रखे बगैर, युगों युगों तक देश उस रास्ते पे आगे चल सके, इस प्रकार का हमारे लिए वो पाथे छोड़कर गए हैं। ये देश के लिए बहुत बड़ी पूंजी है। उनके विचार देश के लिए बहुत बड़ा धन है, देश की बहुत बड़ी संपत्ति है। मैं अंत में यहाँ पर जो श्री अरविंद के विचारों को अपने जीवन के काम के साथ जोड़े हुए लोग बैठे हैं, वो सभी को मन से बहुत विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता हूँ कि आपने भी श्री अरविंद के विचारों को नीचे तक पहुँचाने के लिए जो अपना जीवन कार्य बनाया है, प्रभु इसमें आपको सफलता दे। और मैं एक बात निश्चित कहना चाहता हूँ, मैं बचपन से जन्म से आशावादी व्यक्ति हूँ। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ, शायद हमारे जीवन काल में ही, हो सकता है हमारे जीवन काल में न हो, बच्चे जो यहाँ बैठे हैं, कम आयु के बच्चे बैठे हैं, उनके जीवन काल में श्री अरविंद की कल्पना का भारत हम निश्चित देखेंगे, इसका मुझे विश्वास है। आप सभी ने यहाँ बुलाकर आज के दिन 24 अप्रैल के दिन श्री अरविंद की समाधि पर वहाँ से चेतना और ऊर्जा प्राप्त करने का मौका दिया और आप लोगों के लिए साथ बातचीत करने का मौका दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम। Thank you, sir, for these inspiring words, especially on Shri Aurobindo's spiritual nationalism. And sir, you'll be delighted to note tomorrow we are having a national seminar at Shri Aurobindo Society on Shri Aurobindo's nationalism, which also includes a poster exhibition on the phenomenal revolutionary work of Shri Aurobindo from the year 1893 to 1910. So, ladies and gentlemen, you're all invited for the seminar and as well as to enjoy the exhibition. Thank you once again, sir, for your inspiring words. And I would like to, before having the vote of thanks, just remind all of us here again, those who are dedicated to the work of spreading, as Honorable Home Minister just inspired us to spread the work of vision of Shri Aurobindo and the Mother, just to share a few words from the Mother that she said a few months before the centenary of Shri Aurobindo in 1972, when she said in 50 years, which is today in 2022, the whole world, all the receptive section of humanity, all the receptive section of the world will be embraced, not embraced, she said, absorbed in the power of Shri Aurobindo's thought. And then she added, those who already are have the good fortune of being the first ones. That's all. So we are the privileged ones to have this good fortune. And sir, you have inspired us to offer more and more of our service to spreading the vision and work of Shri Aurobindo and the Mother. And now I would like to request Dr. Ajit Sabnis to give the vote of thanks. Dr. Ajit Sabnis is a postgraduate from Indian Institute of Technology, Madras. He's also the chairman of Shri Aurobindo Society, State Committee, Karnataka. And he also wears two other hats of being the managing trustee of Shri Aurobindo Complex Trust and the chairman of Mirambika School for New Age. Dr. Sabnis. Thank you, Beluji. Respected dignitaries, Guru Bandhus, invitees, faculty of the university, ladies and gentlemen, it's truly a great honor and privilege to stand before this august gathering here and propose vote of thanks. How do I begin my vote of thanks? Let me begin my vote of task by offering salutations to our great masters, Shri Aurobindo and the Mother, to be in our midst and showing us the way, the true path that we need to tread. For Shri Aurobindo, India was not just a piece of land. India is not just a piece of land. It is the Bharata Shakti,
the living energy of great spiritual conception, and the fidelity to it is the very principle of her existence. On the eve of India's independence, 1947, in his message, Shri Aurobindo spoke of his 5 dreams, including India's spiritual mission and her role in building a new world order. And sir, one of the dreams was also what you mentioned just now about the Akhanda Bharat. As one of the researchers of Shri Aurobindo's literary works points out, there is no subject under the sun that Shri Aurobindo has not touched. In that sense, he stands tall, much above the pedestal, unparalleled in the entire human history. There is no one who can stand parallel to Shri Aurobindo in his literary works. From Isha Vasyamidam Sarvam to Bhavani Bharati and to India's freedom movement and beyond, Shri Aurobindo upholds and upheld the spirit and the essence of Sanatana Dharma. Shri Aurobindo Society, through its branches and centers across the nation, is committed to be a part in this building of a new world order as envisaged by Shri Aurobindo and the Mother. Sir, through its works, Shri Aurobindo Society has taken up several works aligning with all 17 sustainability development goals. Sir, for the government, these 17 sustainability development goals are SDGs. For us, they are 17 spiritual development goals, and they are 17 SDGs for us, which actually lay parallel and aligning with the existing government 17 sustainability development goals. We have more than 25 verticals which we are following with these sustainability development goals. During this auspicious sesquicentennial year of Shri Aurobindo's birth anniversary and India's Azadi Ka Amrit Mahotsav, I, on behalf of Shri Pradeep Narang, the chairman of Shri Aurobindo Society, Shri Vijay Bhai, member executive, thank our honorable and beloved Prime Minister of India for constituting the high-level executive committee for celebrating this sacred moment. I take this opportunity to thank the wholeheartedly our honorable Minister of Home Affairs, Shri Amit Shah ji, for being with us and releasing the research work on the Constitution of India. I also take this opportunity to thank Dr. Tamil Sai Soundararajan, Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Shri N. Rangaswamy, Honorable Chief Minister of Puducherry, Shri Namasivayam, Honorable Home Minister of Puducherry, Shri Selvam, Speaker of the Assembly, Government of Puducherry, Shri PML Kalyan Sundaram, MLA, Government of Puducherry, Professor Guru Charan Singh, Vice Chancellor of Pondicherry University, without whose cooperation this venue would not have been possible, Shri Ashwini Kumar, IAS, the Chief, the Principal Secretary, the Government of Puducherry, for their gracious presence on this occasion. I would fail in my duty if I do not thank the press media, the TV media, the national and the international reporters who are present here, the entire police department, the staff members of Shri Aurobindo Society, and all others who have actually helped to make this event a great success. Special thanks goes to Shri Pradeep Prem, Surya Pratap, Kavita, and others for their extraordinary contribution for this successful event. Thank you all for being with us, and thank you once again, sir, on behalf of Shri Aurobindo Society for coming here. Jai Hind, Jai Mahabharat. Ladies and gentlemen, may I now please request everyone to stand for the national anthem. Himalaya
चल यमुना गंगा उच्छल जलधितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता